DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे किया है कि पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी का सफाक और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी भारत को बता दे वो हर कुछ साल बाद कशीदगी के लिए दहशतगर्दी का जाली बयानिया बनाकर मजलूम नहीं बन सकता। भारत पाकिस्तान के साथ जंग की गुंजाइश निकालना चाहता है तो ये इज्तिमाई तबाही का पेश खैमा होगा। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में आमने मुमकिन नहीं। If India thinks that it can carve out space for war between India and Pakistan, it is actually a recipe for carving out mutual annihilation. The world needs to also to communicate and understand that they cannot allow and should not allow India to trump up this fake narrative of being victim of terrorism years after year and raise this bogey. And at the same time, Kashmir is an external problem. It's a problem that involves three countries, Pakistan, India and China also. As we always say that the Kashmir remains the central issue. It is the unfinished part of the agenda of the partition of India and Pakistan. Till the time we don't resolve the issue of Kashmir as per the will of the people, as per the United Nations resolution, there can never be peace between India and Pakistan. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. We love peace. If you see the streets of Pakistan right now, we are not celebrating victory, we are actually celebrating peace.